हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस का वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन पेपर 2023 का। तो यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए लेकर आए हैं ये पेपर। इससे पहले हमने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देख चुके हैं हम ये पेपर। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और फॉर एन इंसिडेंट रे विच इज़ नॉर्मल टू द मिरर। आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज, आंसर हो जाएगा सनलाइट। The supply of water in the field at different intervals is called irrigation. In which part of India came a massive earthquake on 26 January 2001? Answer हो जाएगा भुज, गुजरात. In humans, the sound is produced by larynx. यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, larynx. The part of the earth where living organisms are found is called biosphere. Which of the following is non-biodegradable substance? तो आंसर हो जाएगा plastic bags. The liquid in which sodium metal is preserved at room temperature is kerosene oil. Name of the discoverer of vaccine for smallpox, Edward Jenner. एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज किलो जूल पर केजी। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। द ऑर्गेनिज्म विद लार्जेस्ट एग इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा एग होता है, तो ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग का अंडा। द मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंडक्ट फोर्स? मस्कुलर फोर्स। ल्यूब्रिकेंट्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज फ्रिक्शन। द केमिकल जनरली यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज ब्लीचिंग पाउडर। फिल इन द ब्लैंक, रिमूवल ऑफ वेट्स इज कॉल्ड वेडिंग. All bodies attract each other with a force. The force is called force. Gravitation force. Bakelite is bad conductor of heat and electricity. Blank fuel is an exhaustible resource. Answer हो जाएगा fossil. Blank is our nearest star, sun. Sun is our nearest star. Sixth है, earthquake is caused due to disturbances deep down the earth's crust. Sound is produced by a blank object. यहाँ हो जाएगा vibrating object. The blank of male and female gametes is sexual reproduction fusion. Blank keeps the record of endangered species. Answer हो जाएगा red data book. Blank and blank. Metals are soft and can be cut with a knife. यहाँ हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. स्टेट ट्रू और फॉल्स. फ्रिक्शन रिड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ट्रू. amoeba is a multicellular organism. False. Mercury is liquid at room temperature. True. Oxygen gas is responsible for greenhouse effect. False. Each egg is a single cell. True. Match the following column. A को column B से match करना है. CuSO4 copper sulfate, ZnSO4 zinc sulfate, FeSO4 iron sulfate, H2SO4 sulfuric acid. SO4 को सल्फेट ही बोला जाता है ज़्यादातर, और कॉपर Cu, जिंक Zn और आयरन का होता है Fe. तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए. मेटल्स के सभी के आपको जो सिंबल हैं वो याद होने चाहिए, मेटल नॉन मेटल के. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. राइजोबियम बैक्टीरिया. Give 2 examples of thermoplastic, polythene and PVC. What is metal? Explain with the examples.
Some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity. The material which generally possess these properties are called metals. The example of metals are iron, copper, aluminum, etc. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्बिशन. आंसर हो जाएगा अ केमिकल प्रोसेस इज विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कॉम्बिशन. व्हाट आर द एंडेंजर्ड एनिमल. आंसर हो जाएगा दोज एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिक्लाइनिंग टू अ लेवल दैट कैन एक्सटिंक्ट आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स. What do you mean by sexual reproduction? Reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. What is electrostatic force? Answer हो जाएगा the force of attraction of repulsion between two charged bodies is called electrostatic force. What are asteroids? There is a large gap between the orbits of Mars and Jupiter. A large number of small objects which also move around Sun are called asteroids. What is reflection of light? When a light ray is incident on a reflecting surface, if it returns into the same medium, it is called reflection of light. What is the full form of LED? Write its one use. The full form of LED is light emitting diode. LED is used when weak electric current is flowing because it gives glows in it. Short type questions हैं. What do you mean by food preservation? Write the chemical method for food preservation. आंसर हो जाएगा there are some substance with help to check the growth of microorganisms in food materials. They are called preservatives. Different between the metal and non-metal. तो यहाँ पर metals में लिखते हैं metal are good conductor of heat and electricity जबकि non-metal are bad conductor of heat and electricity like bauxite. Exceptions in graphite which is non-metal although is a good conductor of heat and electricity. Metals are malleable and ductile. Non-metals are non-malleable and ductile, but these are brittle. Metals are lustrous and can be polished. Non-metal are generally non-lustrous and cannot be polished. Metal are solids, exception in mercury, which is liquid. Non-metal may be solid, liquid, or gas. Melting and boiling point of metal are generally high. Melting or boiling point of non-metals are comparatively low. Metal form basic oxides, non-metals form acidic or neutral oxides. Time period of tuning fork is 1/40 second. Find the frequency of tuning fork. आंसर हो जाएगा तो ट्यूनिंग फॉर्क बराबर हो जाएगा 1 टाइम पीरियड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 1/40 तो हो जाएगा 40 हर्ट्ज. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. तो यहाँ पर इस तरह से आपको लेबल डायग्राम बनाना है अर्थ का. कोर्स दिखानी है, कर्व्स दिखाना है, ठीक है, सभी को नेम करना है आपको. नेक्स्ट है व्हाट इज अ मेटेरियर. Why is it seen for only a short period? A meteor is a part of asteroid or comet. Due to friction of atmosphere, it heats evaporates quickly and therefore is seen brightly only for a short time. What are meteorites? आंसर हो जाएगा लास्ट meteors that are not completely evaporated due to friction collide with the earth are called meteorites. Differentiate between estrogen and testosterone. तो हो जाएगा एस्ट्रोजन में लिखेंगे दिस इज फीमेल हार्मोन secreted by ovary. This is male hormone secreted by testes. This hormone develop the secondary female character as development of breast. The hormone develop the secondary male character as beard, mustaches grow. जो मूंछ और दाढ़ी आती है वो इसी के कारण होता है, ठीक.
चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफाइन। और इसकी अगर आप करना चाहें अथवा में तो वो है डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल, राइट द नेम ऑफ टू प्रोकैरियोटिक्स। तो आंसर में लिखना है प्रोकैरियोटिक सेल में in this type of cells the nucleus is not well organized and nuclear membrane is absent. Organelles are not covered by membrane. Example are bacteria and blue green algae. Such cell organisms are called prokaryotes. यूक्रियोटिक सेल्स में लिखेंगे इन दीज सेल्स well organized nucleus with a nuclear membrane is present and organelles are covered by membrane. As in peel of onion and cheek cells, eukaryotic cells are present. Such cell organisms are called eukaryotes. इजी ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बड़े आपको लिखने हैं। तो एक्सप्लेन द पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद लेबल डायग्राम। तो आपको कोई भी एक करना है तो ह्यूमन आई एनाटॉमी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ह्यूमन आई का हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है अगर आपको समझना है ह्यूमन आई को। तो ये देखिए आपको बिल्कुल लेबल के साथ में आपको इसी तरह से करना है इस क्वेश्चन को। और स्ट्रक्चर ऑफ आई हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स के बारे में लिखना है जैसे स्लेरा दिस इज अपर लेयर द आई बॉल दैट इज थिक सॉलिड वाइट एंड ओपिक्यू this helps maintain the structure of eyeball and to protect eye from external injuries. Cornea, this is small bulbs or out part in front of sclera. This can also be said and transparent layer that joins upper and lower part of sclera. Iris, it is a opaque membrane behind the cornea. There is a hole in middle of the iris. It is mostly black in color. Pupil, the hole in the iris is called pupil. It has quality that by the help of muscles its size decreases on more light intensity and its size increases to dim light in conditions. Its diameter increases to 1 centimeter in darkness while it decreases to the size of pinhead in sunlight. Eye lens, there is a thick convex lens behind iris called eye lens. This lens is soft and made up of transparent material and remain at a fixed place with the help of muscles. Generally, the outer surface of convex lens has a radius of 1 centimeter and the radius of the other inner surface is 6 mm. By changing the stress is muscles, the radius of curvature of the lens can be altered. A small inverted and real iridescent is formed of an object is seen through this lens. Choroid, तो यहाँ पर हो जाएगा on the inner side it is black colored film present beneath the sclera. Because it is black it absorbs all the light so that no reflection takes place within the eye. It has lot of blood capillaries and veins on its surface which provides nourishment to the eye. Retina, it is innermost layer beneath the choroid. The layer is called retina. Retina is composed of many nerve fibers. The stimulus experienced by nerve cells reach brain through optic nerve. What do you mean by air pollution? Mention the harmful effect of air pollution. तो आपको एयर पोल्यूशन के बारे में इस तरह से डिफाइन करना है और उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो लिखने हैं। तो इन एयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस आर प्रेजेंट इन definite ratio. The imbalanced position of ratio of these gases is called air pollution, or when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, then it's called air pollution. The harmful effects of air pollution are following. Air pollution having affects the respiratory system of animals, causes disease like bronchitis, asthma,
lung cancer, and pneumonia. Ozone depletion occurred due to air pollution, so ultraviolet rays of sunlight reach the earth. They harm eyes and immune system and cause skin cancer. Poisonous gas like carbon monoxide reach in our body and decrease the oxygen carrying capacity of blood. Air pollution is also responsible for acid rain and global warming. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इट डन, एक्सप्लेन इट वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, राइट इज टू यूजेस, नेम द प्रोसेस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग ऑन सिल्वर ornaments and also draw a diagram of the process. तो इसमें आपको कम्प्लीटली आंसर करना है, कोई भी आप एक क्वेश्चन कर लीजिए. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग समझेंगे हम. कोटिंग ऑफ अनरिएक्टिव मेटल ऑन एनी अदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एग्जाम्पल, गोल्ड प्लेटिंग ऑन द सिल्वर ज्वेलरी इज डन बाय दिस मेथड. The reasons for electroplating are main element is to be protected against corrosion. The make attractive to protect it from scratches. Method of electroplating: the substance which is to be coated in connected to negative terminal of the battery, and the coating material is connected to the positive terminal. The electrolyte is made up of the salt of the metal which is to be coated, and both the electrodes are dipped in the solution of electrolyte. When current flows through it, then the thin layer of anode metal is coated on the object which is acting as cathode. तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बना देना है इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का. तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट पेपर. तो उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा. अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह और भी वीडियोस हम आपकी कक्षा के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनाते रहेंगे. तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.